Hello and welcome to Sports Today and a very, very special show. Very many of us who follow women's cricket very closely were disappointed with what India put out yesterday. We were disappointed because we expect a lot from this team. We have seen that happen in 2017 and 2020, two finals. And what we have been seeing recently in the South Africa series and in that first game, the white ball game against England, was below par. So we will deep dive into that. We will deep dive into that today with two very special guests. I've got Rima Malhotra and Jaya Sharma. But before that, I will play a clip of the Kane Williamson exclusive interview, his only interview since the WTC. He's holidaying with family in the UK, not returning to New Zealand at the moment. Not returning to New Zealand at the moment to celebrate, but he's obviously celebrating alone in the United Kingdom, having achieved the Test Mace. World champion Kane Williamson. So here's what Kane Williamson said in that interview. The full interview for you at 6 p.m. on Sports Today and 6:30 p.m. on India Today. So the full interview at 6 p.m. on Sports Today and 6:30 p.m. on India Today. But here's a clip of the Kane Williamson interview before we move on to Rima and Jaya and go into a deep dive on the women's game and the way forward. Kane Williamson. I wouldn't lie to you. When that Ravichandran Ashwin delivery happened and the umpire gave you out, all of us were like, yes, we have a chance. We have a chance. But then that DRS. Talk to me about that DRS. I mean, would you immediately go for it? Did you think that, yes, it was close? What was the mindset then? Well, I suppose you have to assume it was close because you were given out initially. But I did think because of the way Ravi turns the ball that, there might be a bit of a chance. So it was nice to review it and it go my way. It was a good one. It was a fantastic DRS today. Fantastic DRS. But Kane, just talk to me a little bit about two questions. One, everyone said because of the fact that the two tests you all had played, preparation, did you actually feel that you went in better prepared? Look, it's very hard to know what the best preparation is, but all I can say is that India were as competitive and as strong and all of the above as we were expecting, and they're very much a hardened, experienced, world-class cricket team, and that is what we faced. And as we know in England, in Test matches in particular with the Duke ball, that different things happen at different times, and I think we saw that in the game, and it was a fantastic game. I mean, as for us, I suppose it was coincidental that tour was booked in prior to making the final of the World Test Championship. But having said that, I suppose it was trying to get that balance really for us, because there was 3 Test matches in really quick succession. We didn't want, I suppose, our bowlers overdoing it in particular. So there was a balance, between trying to use, I suppose, have this amount of cricket, which is, you'd like to think, beneficial, but get the balance right. So, there's nothing perfect. There's no right or wrong answer, but it was nice to be over there playing against England, who are obviously a very difficult side to beat, and then go into the Test Championship. The second one that I wanted to ask is, when on the final day did you start to feel? Because all of us at the start of the day thought, yes, like you said, that the draw is the most likely outcome because of the rain and everything else. But when was it that you as a team, as a leader, you started to galvanize the boys saying, yes, something can happen? For us, it was very much about going into the day and certainly respecting the fact that every result was still a very realistic option. I suppose all different percentages of chances, but so playing our cricket and trying to do that as well as we could, and commit to what's important to us, which was sort of no different to the last few days or even a lot of the other games that we have been playing, and see sort of how the game unfolds, because it can unfold quickly, and if the chase is on, you can, I suppose, try and up the ante if that opportunity arises. But pushing too hard can often, I think,
see the game get further away from you. So yeah, we wanted to sit in it for a period of time and operate, I guess, and it was great that we were able to take some early wickets on that day, which clearly set up, I think, more chances of results for both teams, really, because then we saw the Indian side, look to counter-attack and try and get runs quickly, and there's that balance, isn't it, between time left in the game, amount of runs, and then the more time left in the game as well meant clearly India had a fair shot too. If perhaps they got a few more runs quickly, we saw that surface was definitely offering enough to bowlers to have a funny hour, perhaps like we managed to have, and all of a sudden the game's right in the balance. So it was an incredibly exciting game. I'm sure it was to watch, and for us it was really intense but great to play as well. So there you have it, Kane Williamson, the world's big ticket into at this point in time, the world champion test match captain for New Zealand, and clearly one of the legends of our game. The full interview on Sports Today at 6 p.m. and on India Today television at 6:30 p.m. for those of you who have missed the broadcast, the first broadcast at 2 p.m. in the afternoon. Time to deep dive into our women's game. What happened yesterday has raised a number of questions. Please, can I have my guests, Rima Malhotra and Jaya Sharma, both former cricketers. Rima's there, Jaya I'm sure will join in. Rima, first question to you. क्या हो रहा है? कल तो देखिए हम लोग सब एटलीस्ट जब वो क्लाउडी था, रेनी था, so I thought अच्छा swing होगा, ठीक है. But then India actually started well. The ball wasn't doing much. The batters were looking good. Shefali can happen first game. But then that Poonam Raut, 1 of 17, Mithali Raj gets stuck, Harman not performing. Your thoughts and what is the way forward? Well, sir, it was a huge disappointment when you see the batting lineup like this. And what I feel, मैंने पहले अपनी वीडियो में भी कहा था कि दो एक जैसे प्लेयर, I mean, जिनका खेलने का तरीका एक जैसा, the way मिथाली and पूनम plays, it is almost the same. अगर आप दो एंकर्स रखेंगे तो वो वनडे में अब काम नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले क्रिकेट होता था जब आप 200-180 करते थे और वो एक अच्छा टोटल माना जाता था. लेकिन अगर आप अभी 200 करेंगे तो कोई भी टीम आंख बंद करके वो टोटल आपको चेस कर लेगी. तो अगर आपको 250 प्लस जाना है या अराउंड अबाउट 300 जाना है, तो डिफेंस, अटैक, स्ट्राइक रोटेशन, ये सबका मिक्सर होना चाहिए. इसीलिए दो एक जैसे प्लेयर अगर एक साथ खेलेंगे तो यही स्कोर रहेगा. कैसे मिक्स करेंगे, फॉर्म आपकी इंपॉर्टेंट है, कौन से प्लेयर का क्या रोल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. रीमा, मुझे ये बताइए, मैं आपसे कंप्लीटली सहमत हूँ. एंड द क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू इज, हमारे पास अभी जो प्लेयर्स हैं इस टीम में, जो टैलेंट है, रिचा इस टीम में नहीं है. सो जेमी इज देयर, प्रिया पूनिया इज देयर. So what would you do? Would you speak to the girls? Because my concern also is Harman's not scoring. And if you see from 2018, her average I think is 27-28. Trisha had sent me all of the averages yesterday. And she is one of the pillars of this team. Harman not scoring puts additional pressure on the rest of the girls. So what would be your plan going forward? आप 30th का मैच में क्या changes करोगे, if anything? बैटिंग कोच अगर आप होते तो आप क्या बात करते? So what are your thoughts? So Harman's form is definitely a concern for Team India, because अगर मिडिल ऑर्डर में आपके पास फिनिशर और कोई है नहीं, क्योंकि पहले मैं स्क्वाड की बात करूं तो एक एरिया ऑफ कंसर्न है कि किस तरह से आप स्क्वाड को पिक करते हैं. हमने पहले साउथ अफ्रीका सीरीज में भी बात की थी कि आपने कोर को बाहर रखा, उसके बाद जब आप कोर को यहाँ पे लेके आए तो किसका क्या रोल है. आपके इस टीम में स्क्वाड में देंगे 6 ओपनर्स हैं. मिडिल ऑर्डर अगर आप हरमन के साथ किसी को फिनिशर रखना चाहें तो आपके पास वो कॉलम अभी भी खाली है. तो अब जो रिसोर्सेज है उसको कैसे यूज करना है आपको ये देखना होगा. एज अ बैटिंग कोच मैं ये कहूंगी कि प्ले फ्रीली, प्ले विद इंटेंट, शो सम इंटेंट एटलीस्ट. जैसे एक अच्छा एग्जांपल इंग्लैंड ने सेट किया है, स्ट्राइक रेट ऊपर रखना है तो इंटेंट शो करनी होगी, पॉजिटिव क्रिकेट खेलना होगा, और प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक, सिंगल डबल्स, रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं. लेकिन जब हम एक पूरे मैच का एनालाइज करते हैं ना तो हर चीज काउंट करती है कि कितने सिंगल्स आपने लिए, कितने स्कोरिंग शॉट्स आपने मारे, या कितना आपने इंटेंट शो किया. एक टाइम था जब शेफाली बैटिंग कर रही थी तो एवरेज अच्छा था. द मोमेंट शेफाली और स्मृति आउट हुए उसके बाद एवरेज देखने का था. 32 ओवर्स में अगर आप 100 कंप्लीट करते हैं और आपके सामने वाली साइड 19th ओवर में 100 कंप्लीट करती है, तो वो आपकी समरी बताती है मैच की किस इंटेंट से आप वनडे खेलने उतरे.
So would you do any changes? I mean, because आपने जो कहा मैंने भी कल वही ट्वीट किया था कि मिताली और पूनम similar players. For me at least, Mithali is the one who will carry on. I mean, if she gets a 20-30, she'll end up with a 70-80. At least the team can rotate around her. In Poonam's case, unfortunately, she gets out after 30s, at least in recent times. So what would you do? I mean, would you talk to Poonam and say, okay, fine, you are looking good, you have the shots, but show intent. You cannot have sort of 1 in 19 balls. Is that the way forward? Would you do changes? I won't say anything to Poonam because there's no point. This is the only way she plays. और यही एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि मिताली should bat at number 3, Harman should come at number 4, and you need a replacement. Either play all-rounder Radha Yadav or promote Pooja Vastakar as a pinch hitter or use as a batting all-rounder, or maybe you can get in Jemimah Rodrigues, क्योंकि उनका फॉर्म नेट्स में कितना कैसा है कैसा ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. आप रेपुटेशन पे नहीं जा सकते, उस टाइम पे फॉर्म क्या है उसके हिसाब से आप प्लेइंग 11 रखेंगे. तो पूनम मेरे हिसाब से इस 11 में फिट नहीं करती, क्योंकि आपके पास मिताली राज है और हरमन के ऊपर प्रेशर आता है. स्मृति हमने देखा प्रेशर में उसने विकेट दिया. 2-1 जैसे अगर पूनम खेलेगी तो डेफिनेटली नंबर 3 खेलेगी, उसकी वजह से मिताली नंबर 4 आएगी. तो इक्वेशन सेट नहीं होता. मिताली शुड बैट एट नंबर 3, क्योंकि वहीं पे उन्होंने रन्स भी किए हैं और सक्सेस भी वहीं पे हासिल किया है. मैंने उनके पोस्ट मैच इंटरव्यू में सुना था कि शी वांटेड टू ग्रूम द प्लेयर, बट दिस इज नॉट द टाइम टू ग्रूम द प्लेयर, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो वर्ल्ड कप आ रहा है. ये फ्यू मैचेस आपका रोड है, जर्नी है, और आई मीन 8 मंथ बाद शायद वर्ल्ड कप है. तो ग्रूम करने का टाइम शायद उसके बाद होगा. अभी नंबर 3 पे मिताली को खेलना चाहिए, अभी से लेके वर्ल्ड कप तक, क्योंकि अगर जल्दी विकेट गिरती है तो वो एंकर कर सकती है इनिंग. हरमन भी आजकल टाइम लेती है, ऊपर आए, टाइम स्पेंड करे क्रीज पे, क्योंकि रन्स क्रीज पे रह के ही बनेंगे, बाहर बैठ के बनेंगे नहीं. फॉर्म में अगर आपने वापसी लानी है तो आप क्रीज में खड़े रहिए, रन्स बनाइए. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है. एक और सवाल मेरा आपसे जो था कि डोमेस्टिक क्रिकेट अगर हम देखें, मैं सबसे बात कर रहा था कल, इंद्रानी रॉय वाज फेनोमेनल. तो यही तो मंच है, खिलाइए ना. आई मीन, यू हैव सीन व्हाट हैज हैपेंड विद शेफाली वर्मा. Why don't you play, if you are going this route, the one that you suggest, that you are going Mithali 3, Harman 4, Deepti 5, why don't you try Indrani Roy at 6 to finish? Again, I'll say there's one problem between the about the selection of the players, क्योंकि इंद्रानी रॉय जो है वो भी एक ओपनर है. तो अगर आप 6 ओपनर्स के साथ जाते हैं तो आपके पास मिडिल ऑर्डर है नहीं, और अगर आप इंद्रानी रॉय को खिलाते हैं तो आप कहाँ खिलाएंगे? वन बिग क्वेश्चन. क्योंकि पूरा डोमेस्टिक मैंने कवर किया था, मैचेस टेलीकास्ट थे, तो उन्होंने ओपनिंग किया था झारखंड से. एज एन ओपनर आप खेलते हैं डोमेस्टिक, और इंटरनेशनल में आपको मिडिल ऑर्डर में खेलने को मिलता है. आप एक यंगस्टर है, तो वो प्रेशर आप हैंडल कर पाएंगे क्या? आपके पास वो काबिलियत है? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली कैप्टन और कोच को सॉर्ट आउट करने होंगे. मुझे लगता नहीं कि ओपनिंग की प्लेस खाली है, और मुझे लगता नहीं मिडिल ऑर्डर में इंद्रानी रॉय की वो गेम सपोर्ट करेगी. क्या वो 3 में खेल सकती है पूनम की जगह? डेफिनेटली खेल सकती है, लेकिन फिर क्वेश्चन आता है, अगर आप लॉन्ग टर्म खेल रहे हैं, क्या आप मिताली को नंबर 4 खिलाएंगे? माई पॉइंट इज योर बेस्ट बैटर शुड कम एट नंबर 3, विच इज मिताली राज, और वहीं से उनका सक्सेस है. मिडिल ऑर्डर को भी लेके चलती है साथ में, और जब वो स्टार्ट मिल जाता है, जरूर वो स्टार्ट में टाइम लेती हैं, लेकिन बाद में वो कैचअप करती है स्ट्राइक रेट से, तो खिला सकती हैं. लेकिन नंबर 3 पे इंद्रानी रॉय, आई डोंट थिंक सो इट्स राइट आइडिया. ओके, सो अगर आप कह रहे हो मुझे कि पूनम राउत को ड्रॉप करो, सो हु इज द रिप्लेसमेंट? आप किसको खिलाओगे? आप मुझे पहला 6 दीजिए. तो ओपनर्स तो ठीक है, छोड़ दीजिए. आपने 3 में मिताली कहा, 4, 5, 6 क्या है? 4 will be Harmanpreet Kaur, then I'll go with maybe Jemimah if she's in form. Otherwise, you can promote Pooja Vastakar or Deepti Sharma is there. ये आप लाइन अप कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे आपने कहा इंद्रानी रॉय को, तो ये वो टाइम है जब आप कर सकते हैं. बट किस नंबर पे करेंगे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि इतने मैच आपके पास है नहीं कि आप हर एक मैच में एक नया एक्सपेरिमेंट करें. अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या आप उसको बैक करेंगे, या एक मैच में फ्लॉप होने के बाद क्या उनको ड्रॉप करेंगे? इसलिए दिस इज नॉट द राइट टाइम. Number 3 should be Mithali, then number 4 Harmanpreet Kaur, number 5 can be Jemimah Rodrigues or Deepti Sharma. So one more question, Rima, what is wrong with Harman? Because time to time, I mean, even in the South Africa series, one game she was brilliant at the finish. So it's not as if she's not scored. But what explains this inconsistency and what is the solution? अगर आप उनकी जगह होते, आपको क्या लग रहा है? What is going wrong and what should Shiv Sundar Das, for example, who's a very good batting coach from what I've heard, what should be the kind of thing that she should work on? See, I played a lot with her. मैं उनके साथ भी काफी बैटिंग किया है, नॉर्थ जोन में, वेस्टर्न रेलवे में, बहुत हमने साथ खेला है. उनका जो गेम था ना, स्टार्टिंग से ही था टू अटैक.
जब वो शॉट्स खेलती हैं तो वो एक अलग ही तरीके की प्लेयर नजर आती हैं, लेकिन 2017 की इनिंग के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है, थोड़ा टाइम लेना पसंद करती है। पहले अगर 2017 से पहले जाएं तो वो स्टार्टिंग से ही अगर पहला बॉल मारने का मिलता था तो वो मारती थी। वो चेंज मैंने उनका अभी 2-3 साल में देखा है, शायद वो सूट नहीं कर रहा, क्योंकि आप अगर अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट छोड़ेंगे ना तो आप बैकफुट में आएंगे। उनको वैसा ही खेलना चाहिए था जैसा उनका नेचर है, इसलिए मेरा मानना है कि शिफाली वर्मा को आप छेड़िए ना, जो उनको आता है वही करने दीजिए। हरमनप्रीत कौर को भी वैसा ही करना चाहिए, जो उनका क्लास है, जो उनका स्ट्रेंथ है, जो उनका वेपन है। उनका वेपन है शॉट्स खेलना। पहले वो कहती थी जब वो 6 मारती थी तो उनको कॉन्फिडेंस आता था। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। वेस्टर्न इंडीज के एक प्रैक्टिस गेम में हम मैच खेल रहे थे, मैं और हरमन एक साथ बैटिंग कर रहे थे। हरमन ने बॉल 1 पे लॉफ्ट किया बॉलर के ऊपर से और वो क्लीन हो गया, 6 के लिए गया। तो उसके बाद जो उसने इनिंग शुरू की, शी स्कोर्ड 100+ इन दैट मैच अगेंस्ट सेंट्रल रेलवे। और जब भी मैं बैटिंग में आ रही थी तो जितने भी टीममेट्स थे वेस्टर्न रेलवे के, वो उन्होंने बोर्ड पे 1 लिख दिया था कि मैं 1 लेके स्ट्राइक दूं हरमन को। द मोमेंट हरमन स्ट्राइक पे आती थी तो 6 का बोर्ड खड़ा करते थे। तो वो पिक्चर उन्होंने न केवल फैंस पे, अपने टीममेट्स पे वो भरोसा जताया था, लेकिन आज शायद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मे बी अ वन गुड नॉक कैन चेंज द थिंग फॉर हर। पॉजिटिव खेलना होगा। अगर आप सर्वाइव करने के लिए खेलेंगे तो दिस इज नॉट हरमन, वो हरमन का स्टाइल ही नहीं है। उनका स्टाइल है प्ले अटैकिंग क्रिकेट, जैसे उन्होंने बिग बैश में खेला, जैसे उन्होंने आईपीएल में खेला। दिस इज द वे शी प्लेज, और उनको उसी पेस से खेलना चाहिए, उसी शॉट्स के साथ खेलना चाहिए, उसी इंटेंट के साथ खेलना चाहिए। आप बात करते हो इन लोगों से, डू यू थिंक हरमन इज कंफ्यूज्ड मेंटली, एंड इफ दैट इज द केस, obviously this is Ramesh, Mithali and Shiv Sundar Das's responsibility, because Harmanpreet Kaur in form is a must for India to do well in the World Cup. I don't think so कि mindset थोड़ा सा उनका नेगेटिव साइड पे है, बट पॉजिटिव है। लेकिन जब तक बैटर रन नहीं करता ना, वो कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आता, तो आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या उस क्वेश्चंस के आपके पास सवाल है, वो डेफिनेटली सॉर्ट आउट करेगा। मैनेजमेंट का काम है कि आप उनको लाइसेंस दीजिए। वो पहले भी फिनिशर का रोल करती थी, नंबर 4 पे आती थी या नंबर 5 पे आती थी, तो उनको बोला जाता था, उनको फ्री हैंड दिया जाता था। अभी भी यही करना होगा। यू कैन प्रमोट जेमिमा रॉड्रिक्स इन नंबर 5, क्योंकि अभी आपके पास विद्या कृष्णमूर्ति नहीं है या कोई भी ऐसा मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं है जो हरमन के बाद उसको सपोर्ट कर सके, जो फिनिशर का रोल कर सके। हरमन को आप लाइसेंस दीजिए। शिफाली हरमा को आप बिल्कुल मत छेड़िए। आपको शॉट्स खेलना आता है, आप प्लीज खेलिए। आपको स्ट्राइक रेट बढ़ाना है, यही आपका रोल है। रोल मेंशन करना, इसलिए मेरा मानना है कि जब भी टीम मीटिंग हो, कोचेस का, कैप्टन का ये मीटिंग होना चाहिए कि आपका XYZ आपका रोल ये है, आपका एंकर का रोल है, आपका स्ट्राइक रोटेट करना है, आप एज अ पिंच हिटर खेल रहे हैं, या शिफाली आप अपना नेचुरल गेम खेलेंगे, हरमन यू प्लेइंग रोल एज अ फिनिशर। रोल डिफाइन करना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या टीम में रोल क्लियर है, क्योंकि आप सर्वाइवल के लिए खेलेंगे तो जो रिजल्ट कल आया वो आगे वाले मैचेस में भी आएगा। कल एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर मैं फील्डिंग देखें, आई मीन वो जो नेटली सिल्वर का कैच ड्रॉप हुआ फ्रॉम एकता, उसके पहले पॉइंट से एक बाउंड्री गया, सिंपल, मिताली आल्सो सॉर्ट ऑफ गिव हर अ लुक। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप ये बेसिक्स गलत नहीं कर सकते हो, एंड you know Radha Yadav is waiting in the wings, and Radha Yadav is a terrific fielder. So your thoughts on that? I mean, all of us were building up Ekta Bish, we want her to play, but you've got to be spot on. This is the international level, you are playing for the country. डेफिनेटली ये मिस्टेक्स आपको कॉस्ट करेंगे, और कल वो कॉस्ट किया। शायद सिवा का विकेट्स 1-2 विकेट और दिलवा देता। इसलिए देखिए, अपॉर्चुनिटी है। टेस्ट मैच में पहले ये था कि एकता बिश खेलेगी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हमने स्नेहा राणा को देखा। फर्स्ट मैच में पैचेस में अच्छा बॉलिंग किया, अगर लेकिन आप मिसफील्ड करेंगे, कैच ड्रॉप करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपना भी कॉन्फिडेंस में डेंट लाएंगे, कैप्टन का भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस लूज होगा। और जैसे कि राधा यादव ना केवल अच्छी बॉलर है, आउटस्टैंडिंग फील्डर है और यूजफुल बैटर भी है, तो एक गलती और शायद वो प्लेस फिर से खो सकती है। हमें ये बात भी ध्यान में रखना होगा, शायद एकता बिश को भी, कि कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। टेस्ट मैच में उनको जगह नहीं मिली, पहला मौका मिला आपको वनडे में, अगर आप ऑल आउट नहीं देंगे, क्योंकि फील्डिंग ऐसी चीज है जो आपके हाथ में है। कैचेस विन मैचेस, ये एक मंत्र है जो मेरे को लगता है घूट भर के पी लेना चाहिए हर प्लेयर को, क्योंकि फील्डिंग से आप ना केवल रन सेव करते हैं, आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, आप एक एटमोस्फेयर क्रिएट करते हैं। और जब आप कैचेस ड्रॉप करते हैं, मिस फील्ड करते हैं, तो वो वाइब्स कहीं ना कहीं शोल्डर रब करती है, दूसरे फील्डर्स के भी मोरल डाउन होता है। इसलिए शायद एक मौका उनको और मिले, लेकिन मैं चाहूंगी वो गलती रिपीट न करें, क्योंकि एक्सपीरियंस कंपेनियर है और मैं चाहूंगी उनको अच्छा परफॉर्म करना। करेक्ट, बिकॉज इसमें ये भी होता है कि आप खुद पे प्रेशर डाल देते हो, बिकॉज इट विल प्ले ऑन योर माइंड। आई मीन
And right, like you said, because she's not contracted, she didn't play the test match, so she will also think every match I am under the cosh, I am under pressure. अगर आप कोई performer को हर match में उसको pressure डाल दो, so he or she will not be able to perform. So that is also a case with Ekta Bisht. So it's a peculiar catch-22 where the coaches will have to give these players confidence. ये musical chair नहीं बन सकता है. एक match बाहर चलो तुम. So that is what is also ailing the Indians. The other thing I wanted to ask you, Rima, at least from the experience of the first over, Jhulan got movement, Shikha also got movement. और अगर आप देखें, pressure was building. After the Lauren Winfield wicket, pressure was building. Those two boundary balls came off Shikha, and all of a sudden, Tammy Beaumont was off. And the pressure got released. Your thoughts on that? That are we giving boundary balls every over where the pressure is getting released? Definitely yes. See, apart from Jhulan, मुझे नहीं लगता कोई भी मीडियम पेसर ने अभी तक स्टेप अप किया है. जरूर शिखा पांडे की जो फॉर्म थी पिछले एक साल बहुत अच्छी थी, लेकिन शायद उनके कॉन्फिडेंस में भी थोड़ा सा डेंट आया है क्योंकि साउथ अफ्रीका सीरीज से उनको बाहर रखा गया. इतना अच्छा डोमेस्टिक सीजन भी नहीं गया क्योंकि जयपुर में मैंने वो मैच कवर किए थे. शी वेंट विकेटलेस. यहाँ पे भी वो उतने अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आ रही. सी, इंटरनेशनल लेवल में कंसिस्टेंसी इज द फर्स्ट थिंग. और अगर आप न्यू बॉल बॉलर हैं, अगर आप बाउंड्री बॉल इजी देंगे तो सामने वाले जो बैटर हैं उनके पास प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे. और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में मेरा बहुत भरोसा है, चाहे वो बैटिंग में हो चाहे वो बॉलिंग में हो. और अगर झूलन एक साइड से प्रेशर क्रिएट करती है और सामने वाली साइड से आप बाउंड्री रिलीज करते हैं तो इट विल नॉट हेल्प द टीम एज वेल एज योर कॉन्फिडेंस. आखिरी दो सवाल before I let you go. Unfortunately, Jaya couldn't join because of some technical issue. Trisha wrote to me, if we can get her, do get her, Trisha. Otherwise, we'll get her tomorrow. So one more question, Rima, would you change anybody in the bowling attack or would you go with this existing team? Because, and the other thing is a question on Smriti. She is so good when she bats. But again, there is a question of consistency that's gradually creeping in. 10 run, 15 run, 20 run, and then one fall short, outside off, edge gone. Or, foot movement not happening, getting bowled. Are you concerned about Smriti as well? Not really. She's a good batter. लेकिन definitely she need to take the responsibility now. Being a senior player, काफी मैच उनको मिल चुके हैं and it's high time कि उनको समझना होगा कि कौन सी बॉल खेलनी है as an opener और कौन सी बॉल छोड़नी है. क्योंकि जब आप टाइम लेंगे, क्रीज पे रहेंगे, हमने ब्यूमॉन्ट को देखा, हमने सीवर को देखा, जिस तरह से इनिंग बिल्ड किया, जब आप न्यू बॉल को फेस करते हैं, आपके पास रेंज ऑफ शॉट्स हैं, लेकिन कंट्रोल आपके ऊपर होना चाहिए. वो मैं स्मृति में देखना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि वो एक्ट करे एज अ सीनियर प्लेयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि फ्री हैंड आपने स्मृति को दे रखा है, आई एम सॉरी शेफाली को दे रखा है. स्मृति को थोड़ा एक सीनियर पार्टनर का रोल अदा करना होगा कि कम से कम वो 30 ओवर्स तक खेले. शॉर्ट गोल्स रखें, 5 ओवर्स का. डोंट थ्रो योर विकेट. ये मेरा मैसेज है स्मृति को, क्योंकि आपकी विकेट कॉस्ट करती है मैच में. क्योंकि सामने अगर शेफाली की शॉट्स खेलते हुए विकेट जाती है तो वो अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करता है. लेकिन उसके लिए कल पूनम ने जब आई थी 17 बॉल्स जस्ट 1 रन, शायद वो प्रेशर क्रिएट हुआ और वो अंदर की बॉल खेलने गई. तो सामने वाले बैटर को भी देखना है कि स्ट्राइक रोटेट होती रहे, क्योंकि हर एक खिलाड़ी को यहाँ पे ना एक अच्छी इनिंग्स की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने ज्यादा मैचेस खेले नहीं है. टाइम स्पेंड करना है क्रीज पे, उसके लिए रोटेशन ऑफ स्ट्राइक एक सिंपल सा फंडा है क्रिकेट का कि आप रोटेट करेंगे, नॉन स्ट्राइकर पे खड़े हो जाइए, प्रेशर रिलीज कीजिए और एंजॉय द गेम. आखिरी सवाल, कि we can make a comeback? I think we can. We can, we should. I mean, this is a team we're looking forward for the World Cup, क्योंकि youngsters है, young और experience का एक combination है. Just a matter of confidence and one good match. See, मिथाली पे मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस है, वो जानती है टफ सिचुएशन में कैसे खेलते हैं. हरमनप्रीत की काबिलियत पे आई एम श्योर किसी को डाउट नहीं होगा. बस एक फॉर्म से जो वो ढूंढ रही है, फॉर्म आई विश उनको जल्दी मिल जाए. और एक मैसेज उनको देना होगा कि आप प्लीज खुल के खेलिए. दैट इज द वे यू प्ले, दिस इज योर वेपन, प्ले योर शॉट्स, प्ले एग्रेसिव क्रिकेट, प्ले पॉजिटिव क्रिकेट. क्योंकि हरमन और मिथाली का बैटिंग में चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्मृति और शेफाली के पास फिर भी थोड़ी फॉर्म है. That's where I will finish this, but Rima Malhotra will be back with us on Sports Today. We've got to keep focusing on this team because, as she said, this is a good team with youth and experience, and we have great hopes. Let me also say I've got great confidence in both Mithali and Harman. They are good players, great players, not good players, great players. And we will hope that the two of them take the mantle and steer India ahead. Shefali will click 1 in 3, and every time she does, we'll win. We know that. But days that doesn't happen, days that
we lose our openers, we've got to have a plan B. Unfortunately, we did not have a plan B yesterday. Thank you, Rima. Thank you very much for joining me. Thank you so much. That was Rima Malhotra building up to that second game on the 30th. Now moving on to other sports. In shooting, Rahi Sarnobat winning India's first gold medal at the ongoing World Cup in Croatia. Fantastic pistol shooting in the 25 meters. In the first 6 sets in the finals, Rahi had done 5 perfect sets. She was 8 points clear of the second place silver medal winner. Manu Bhaker also made the final, finishing 7th. So tremendous shooting from Rahi Sarnobat to win India's first gold medal. So India, 1 gold, 1 silver, 2 bronze medals so far. We've still got a degree of competition left in the team events. So extremely good. And more importantly, all of our shooters who have qualified for Tokyo have made the final. That tells you that this shooting team of 15 has tremendous depth. And I am actually looking forward to watching them in action in Tokyo, because I remain very, very confident that the Indian team will come back with multiple medals from shooting. That's all I will say as part of this particular show. Once again, a reminder, the star of the Aegis Bowl, the man who made the Aegis Bowl his own and has won his country the WTC, the big man of world cricket, Captain Kane, will be on Sports Today. The full interview, uncut, without any sort of edits. Full interview for you coming up at 6 p.m. It's close to a 30-minute conversation with Captain Kane. Do not miss that full interview. You guys have asked for the full interview. The full interview premiering on Sports Today at 6 p.m. and on India Today television at 6:30 p.m. Do please watch the Kane Williamson interview and give us feedback. Support Sports Today. Again, I keep saying, your exclusive destination for exclusive content. Look at the kind of exclusive content and you will know what I'm talking about. Plenty more will come your way. For the moment, half an hour later, have your cup of tea, rejoin for the Kane Williamson exclusive. Thank you very much for watching.